Good morning, welcome to the class of civics of class 10. This is chapter 2, part 8 video, you can open page number 30. We have discussed all the 2 points, that is financial power and judicial power in the last video, and even some portion of the emergency power. Some portion of emergency power is still remaining, we will be discussing in this very video, and then we will discuss discretionary power, right? So we will be discussing first the impact of constitutional emergency. What is the impact of constitutional emergency? That portion needs to be studied right now. The president assumes all the function of a state government. The president assumes all the powers of the state government and vests all the executive functions in the governor of the state. जितना भी शक्ति है स्टेट गवर्नमेंट का वो राष्ट्रपति में निहित जाता है एंड ही कंट्रोल्स द स्टेट थ्रू द गवर्नर. स्टेट को गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति कंट्रोल करता है. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ऑन द स्टेट. नेक्स्ट, it says that state legislature are dissolved and the parliament makes laws on the subject of the state bills. State legislature national constitutional emergency में state legislature constitutional emergency में dissolve कर जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाए जाते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में न बनकर संसद में यानी पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर में बनाए जाते हैं. ठीक है. In such a situation, the president exercises all function of the state legislature. It cannot make laws on all subjects in the state list for the particular state. It can make laws on all subjects in the state list for the particular state. जिस स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा है उस स्टेट के स्टेट लिस्ट में जितना भी सब्जेक्ट्स है उन सारे सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है. ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में ही स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल पार्लियामेंट कानून बनाता है. ये अगर आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़े हैं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी. इफ यू फेस डिफिकल्टी यू कैन सी द वीडियो ऑफ क्लास 9, राइट. नेक्स्ट इज एनुअल बजट. The annual budget of the state is passed by the parliament. Annual budget of the state is also passed by the parliament, that is central legislature. Function of the state high court. The president cannot assume the power and function of the state high court during such an emergency. He cannot suspend the working of any provisions of the constitution relating to the high court. हाई कोर्ट का वर्किंग और फंक्शनिंग को सस्पेंड प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग में नहीं कर सकता है. ठीक है. इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट्स रूल कब कब लगाया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड नियरली 100 times on various states in India. It was first imposed in Punjab in 1951. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगा था. It was used in Karnataka in 1989, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश in 1992, बिहार in 1999. तो ये सब प्रेसिडेंट रूल जो है अलग अलग स्टेट में अभी तक सैकड़ों बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल भारत के विभिन्न राज्यों में लगाया जा चुका गया है. ठीक है. फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 360. आर्टिकल 360 इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी. The president can declare a financial emergency when he is satisfied that a situation has arisen in which financial stability or credit of India or any part of the territory is thereof threatened. जब भी देश की अर्थव्यवस्था पे खतरा होता है, देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा होता है, then the financial emergency is declared. So far such a situation has never taken place. Approval by the parliament. The proclamation of financial emergency must be laid before each house of the parliament within 2 months from the date of proclamation. 2 month के अंदर उसको दोनों हाउस में प्रस्ताव जाना चाहिए. The proclamation must be approved by resolution passed by both house of the parliament by a simple majority within 2 months. Otherwise it ceases to operate. If the Lok Sabha is dissolved, the resolution must be passed by the Rajya Sabha within 30 days from the date of the first sitting of the new Lok Sabha. If the new Lok Sabha does not approve within 30 days, it ceases to operate. This is the procedure of approval of the financial emergency. Duration. The financial emergency can remain in operation till it is revoked by the president. जब तक प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं लेगा तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्र पे लगा ही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी.
The proclamation of financial emergency has the following effects. Financial emergency का 2-3 इफेक्ट है जिसको हम अध्ययन करेंगे, right? Union government gives direction to the states. During such an emergency, the union government gives direction to the state to follow certain financial rules and utilize funds. Funds utilization का certain guidelines central government, state government को देता है during financial emergency. Finance Commission. The President may appoint a Finance Commission to suggest measures to overcome the financial crisis and restore stability. Finance Commission को गठन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिगेन करने के लिए, ठीक है. Sorry. Reduction of salaries and allowance of judges and the government officials. Financial emergency जब भी लगता है, the President is empowered to reduce the salaries and allowance of judges of the Supreme Court, High Court and other high officials. The Union government can instruct the states to reduce the salaries and allowance of state government officials. State government officials के salaries को, Union government officials के salaries को, even High Court और Supreme Court के judges की salary को भी reduce किया जा सकता है जब financial emergency लगे तब. So this was all about the emergency power of the President. Now we will see the discretionary power. Discretionary power is not mentioned in the Constitution, but it is mentioned in your syllabus, so we have to study it. So let's have a look at the discretionary power. According to the Constitution, the President is bound to act on the advice of the Council of Ministers, but the President can use his discretion or judgment in following situations. Under certain situations, the President can use his discretion. The certain situation that are the appointment of Prime Minister in the absence of majority. जब किसी दल को भी majority नहीं मिले तो उस समय राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके किसी भी दल के नेता को जो अपना बहुमत सिद्ध कर सके उस समय अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी नेता को अपना बहुमत साबित करने के लिए सदन में आमंत्रित कर सकता है. दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, this solution of the Lok Sabha. When the Prime Minister loses the confidence of the Lok Sabha, instead of regaining, he may ask the President to dissolve the House. The President in such circumstances is not bound to act on the advice of the Prime Minister. जब dissolve करने की बात आ जाती है तो President जो है वो Prime Minister की बात मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है. Next is the bills. Is also related to the discretionary power. The President may withhold his assent to any bills except money bill. Money bill के अलावा किसी भी बिल में President अपने discretion का इस्तेमाल कर सकता है. He can send a bill back to the Parliament for reconsideration. According to the Constitution, there is no time limit when which he is bound to refuse or return to give his assent to the bill. तो मनी बिल के अलावा अन्य बिल में कितने समय में वो रिफ्यूज़ करेगा, कितने समय में एसेंट देगा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, द क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, the election of vice president, term of office of vice president, removal from the office of the vice president, salary and allowance of the vice president, oath of vice president, election of vice president of India, the election procedure and the candidates and the result of the election that is held recently on 11th August 2017. So we will be discussing all this in the next video. That will be the last video of this very chapter. So till then, take care and stay safe. Bye.